Hello, everyone. How are you doing today? Just give me 1 second. So, how is everyone doing today? Welcome. We have another week of Better Breakfast Challenge. And today is Sunday. Please let me know if you were able to follow the recipes that we did and tell us what did you have for breakfast today. Yes, I'm excited to know. Fit and fine. Good evening, everyone. Pancakes, fruits and nuts, idli sambar, nuts, fruits and tender coconut, orange juice and dokla, omelette, idli chutney, fruit. Wow, idli chutney, amazing. Mix dal dosa. Wow, such amazing breakfasts. I am feeling hungry right now. Oats with honey and badam, three fruits. Ragi roti, so amazing. Intermittent fasting with two meals. Wow. I see that whatever Dr. Umesh has been teaching us, we've started implementing that. I hope you're feeling much better. I mean, it's only been few days. We'll see the results in some time. So let's not be in a hurry. Slowly and steadily, we'll get there. But I am so glad to see everybody is implementing whatever they are learning. Amazing. Yes. So today's topic is about weight management. I think it's one of the most sought after topics. So I'm actually really excited to hear what Dr. Umesh has to say today. And let me know how are you feeling about it. If you have a lot of questions, please keep it ready and put it down in the chat so that like right after the session when like the initial 15 minutes when Dr. Mace tells us how and a lot of knowledge about how do we do it, we will after that we will be able to ask whatever questions we might have and we'll be able to get all the answers as well. Amazing. Looking forward to it. Feeling great. It's like I'm seeing questions like how to lose weight in 15 days. But let's wait and hear what Dr. Umesh has to say for 15 minutes. And I'm actually ready for the knowledge session as well. Every time we do these sessions, I'm also learning so much, and I've also tried to implement everything, not everything, but like as and when whatever is possible for me. And this is so useful, isn't it? Perfect topic for how I'm feeling right now. Oh my god, yes. Yeah, 14 hours intermittent fasting. Okay. So we will take these questions after um, 15 minutes and we'll try to keep it very specific to weight management. I think like a lot of people would have questions around that with me. I'm sure most of the questions would be answered when we speak to Dr. Mace. But if there are a few, we will definitely take it after 15 minutes. All right. So let's see. Dr. Mage, are you ready? Are we ready for today's session? Feels like we Yes, are. sir. Hello. नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया. आज भी हम कुछ स्टोरी सुनने वाले हैं. स्टोरीज भी हैं, एनालॉजीज भी हैं और काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. तो आई एम Yeah. एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ एज यू राइटली सेड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सो Yeah. सॉर्ट आउट क्वेश्चन. लाइक इतनी बार ये सवाल आता है ऑन अ डेली बेसिस. इनफैक्ट इफ यू वर टू डू अ सर्वे ना, तो 90% से ज्यादा हमारी कम्युनिटी इज डूइंग दिस बिकॉज़ दे वांट टू लूज वेट. I totally agree. I think like whenever we do testimonials or like when we meet people, right? People proudly say first their age that I'm 70 and I've lost 5 kg weight or something like that. It's so amazing to hear that.
So I think weight loss is like one of the most sought after, Yep. what do you say, A question topics. or the concern. Yes. Yes. Yeah. So I'll Uh, let you take over and Thank you so let's much, listen to Krishna. what you have to say. Yes. Yes. Let's do this. Okay. Good evening. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय झूलेलाल, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? तो टुडे इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग चैट. आप लोगों के बहुत सारे myths are going to get cleared, and there will be some answers that you will get away from this, take away from this session, but there is a lot of frustration as well. आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे वो भी होगा कि यार उमेश मुझे स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज आई वाज सीइंग सम क्वेश्चंस अराउंड कि हाउ टू लूज वेट इन 15 days और हाउ टू वन डे वेट लॉस डाइट प्लान. ये सारे कंसर्न्स आपके क्लियर होंगे. और हमेशा you have to understand between the two kind of information. One, जो आपको अच्छा लगने के लिए, like just to make you feel better, if someone is saying something, but if it is not true, if it is a lie, if it is a scam, and versus other who is going to tell you the truth, थोड़ा harsh हो सकता है but truth हो रहा है. तो you have to decide what you want to go ahead with. You want to go ahead with honesty, scientific knowledge, or you want to go ahead with something which is कानों को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, but it's not true. Because इसमें होगा क्या, आपको अच्छा लगा, आपने सुना, आपको फॉलो किया, but disappointment बाद में आएगी. अभी ऑनेस्टी डिसअपॉइंटमेंट अभी आएगी, बट ये सच्चाई समझ के इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग द राइट थिंग, you will get long term happiness. And on this note, let's talk about weight management. Now, when we did our calorie metabolism ka session, I explained the brief about weight management on that day. कि if you want to lose weight, you have to understand the calorie in, calorie out. You have to understand the calorie budget. तो उसके लिए I have already sent you the calculator, TDE calculator. You have to find out what your maintenance calories are. And then if you want to lose weight, you have to start eating less calories than what you need. And you have to start eating more calories what you need if you want to gain weight. But gain weight के लिए आपको resistance training या workout भी add करना पड़ेगा. सिर्फ ज़्यादा खाना is not enough. ये fundamentals है. इसके अलावा weight loss होगा नहीं. लेट मी पुट इट इन दिस वे, इसके अलावा वेट लॉस हेल्दी वे में नहीं होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज अ हेल्दी वे टू लूज वेट. अंडरस्टैंड दिस. व्हाई हम सब लोग वेट लॉस से ऑब्सेस्ड क्यों हैं? देयर आर मल्टीपल रीजन. सबसे पहला सुपरफिशियल, कि यू वांट टू फिट इन योर क्लोथ्स वेल. आपने कपड़े खरीदे हुए हैं, अब वो फिट नहीं आ रहे हैं, या आपको अच्छा दिखना है, बिकॉज सोसाइटी हैज मेड अ स्टैंडर्ड कि इफ यू आर लुकिंग इन दिस वे यू आर ब्यूटीफुल, इफ यू आर नॉट देन यू आर नॉट. तो ये सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपको पतला होना है, ये शेप में होना है, ये साइज में होना है, ऑल दैट. ये दूसरा आ जाता है. तीसरा, आप टेम्पररी लेवल पे वेट लॉस करना चाहते हो कि आपको हॉलिडे पे जाना है, आप शादी आ रही है, हनीमून आ रहा है, कुछ आ रहा है इवेंट, उसके लिए आपको वेट लॉस करना है कि यार मुझे 4 हफ्ते में आई वांट टू लूज दिस. These are different reasons why people want to lose weight. But I'll tell you why we should focus on lose weight. Because अगर आपका वजन इस जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम, it can lead to a lot of complications in your life. For example, अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं obesity, है ना? obesity मेदस्विता, मोटापा. इट्स अ बीमारी जो आपकी लाइफ में बहुत और कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, हार्ट कंडीशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जॉइंट इश्यूज. ये सारी चीजें आ सकती हैं. वो भी चलो दूर की बात है, आपका दैनिक एक्टिविटी, योर डे टू डे एक्टिविटीज कैन गेट स्ट्रगल्ड, just because your weight is above the range. Then if you're on the other side, आपका वजन जरूरत से कम है, तो भी आपको एनर्जी लेवल इश्यू आएगा, आपका स्ट्रेंथ इश्यू आएगा, आपको फटीग फील होगा थ्रू आउट द डे, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू मैल न्यूट्रिशन कंडीशंस. तो मेरे हिसाब से अगर आपको जो कुछ भी अचीव करना है, इफ यू वांट टू गेन वेट और लूज वेट, यू हैव टू क्लियर योर व्हाई. इफ अगर आपका why is first 3 reasons, superficial, size, shape, society, temporary, then your results are going to be superficial and temporary because you are not looking into health. Healthy way में अगर आप weight loss कर रहे हो तो आप, it's a sign of health ना, तो you should feel better throughout.
बट अगर आपके वेट लॉस जर्नी में आप लेथार्जी फील कर रहे हो, आप मिजरेबल फील कर रहे हो, यू आर इरिटेटेड, हंग्री ऑल द टाइम, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर टेम्पटेशंस, आपको नींद नहीं आ रही, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अनॉयड हो थ्रू आउट द डे, दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लूज वेट. So I want you to figure out your why, and I want you to choose the fourth option. I want you to manage your weight for health. बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट में हो जाएंगी. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एजेंसीज एंड सेलिब्रिटीज. उनका फिगर सोसाइटी के हिसाब से आइडियल है, बट उसके बावजूद दे आर नॉट हैप्पी हियर बिकॉज वो अपना मनपसंद खाना नहीं खा पाते, वो खाना नहीं खा पाते, उनको लिक्विड डाइट्स पे रहना पड़ता है, एंड उनको इमेज इश्यूज हैं. They are not having a good relationship with food. Sorry, there is some issue. I'm not sure if everyone's video is lagging, but I'll try changing the network. Give me 20 seconds. I hope the internet is fine, and I'll take 30 seconds to just see some comments while you guys tell me whether the internet is right or not. Okay. Yes, I will be, and this is the 11th time I'm repeating the same thing. I can't keep one language. There are multiple language people are here, and I can't talk in one language. I have to jump in between Hindi and English. So अगर आप expect कर रहे हो कि मैं सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा. Okay, coming back. तो healthy way में you have to choose your why, and that why should be your health, not anything else. Society is going to judge you regardless. That's what society is. And थोड़ा एक और ऊपर जाते हैं. Who is society? Society is made from the people like us. मार्स से लोग आ नहीं रहे हमें जज करने के लिए, प्लूटो से नहीं आ रहे हैं. वी आर द सोसाइटी. सो इफ यू आर बॉदर्ड अबाउट हाउ पीपल विल जज यू, कितने आप पतले हो, कितने आप मोटे हो, उस पे, तो वी हैव टू मेक चेंजेस एट होम. हमें घर पे जो बचपन से हम बच्चों को ताने देते रहते थे, इतना खा रही है, मोटी हो गई है, या मोटा हो गया है, या हम जो ये हाथी आ गया है, या जो कुछ भी ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स या मजाक में भी बोलते हैं, वो हमें सारी चीजें हमें घर से चेंज करनी पड़ेंगी. इफ यू स्टार्ट judging people, then people will judge you as well, because you are a part of the society. And if you stop doing that, if you start appreciating people for what kind of human beings they are, then people will start doing the same to you. So society को change करना है तो हमें change करना पड़ेगा. But what is health? Health is you should be able to do all the physical activities. आपके दिन का जितना भी काम है वो ease से हो रहा है, आसानी से हो रहा है. आपको जल्दी थकान नहीं महसूस हो रही है, आपको कोई लंबे डिजीजेस नहीं है, आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये कोई डिजीजेस नहीं, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्लीन आ रही हैं, और आप अच्छे से सो पा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ क्लीन है. दैट इज हेल्थ. हेल्थ वो डिफाइन होती है. एक नंबर ऑन द स्केल इज नॉट द हेल्थ. वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑन द स्केल एज वेल. a lot of us, we are like, हमारी बॉडी तो मशीन नहीं है, हमें नाप तोल के क्यों खाना है. इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम, देन आप नाप तोल के अपनी जिंदगी क्यों जी रहे हो? Why are you checking your weight every other week or every day? How many of you check weight on a daily basis or on a weekly basis? आप मुझे बताओ तो, how many of you check weight regularly? Tell me. If you are that person, then my first tip to all of you is, ऐसे अपने हाथ में वो स्केल को पकड़ो, अपने घर की बालकनी में जाओ और उसको ऐसे फेंक दो. नीचे चेक कर लेना कोई है तो नहीं ना, उसको लगना नहीं चाहिए. थ्रो अवे दैट स्केल, बिकॉज आई विल गिव यू अ वेरी 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 सिंपल एनालॉजी एंड यू विल अंडरस्टैंड. हम लोगों को ट्रस्ट इश्यूज क्यों होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दोस्त है, आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, पत्नी, जो कोई भी है, हमें ट्रस्ट इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि वो इंसान आपको आज कोई और चीज बोलता है, कल कोई और चीज बोलता है, परसों कोई और चीज बोलता है, और तरसों पहले दिन वाली चीज बोलता है. उनकी बातें चेंज होती रहती हैं. आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ना. आपका वेइंग स्केल वही कर रहा है आपके साथ. आप आज वेट चेक करोगे, कुछ और होगा, 3 दिन के बाद कुछ और होगा. आपने आज रात को क्या खाया है, उसके हिसाब से आपका वेट होगा. आपका मेंटल स्ट्रेस कितना है, उसके हिसाब से बॉडी वाटर रिटेन करेगी, उसके हिसाब से आपका वेट होगा. आपको थायराइड है नहीं है, उसके हिसाब से आपका वेट अलग अलग होगा. तो जो चीज
आप पे कमिटमेंट ही नहीं दिखा रही है, व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट दैट नंबर? एंड व्हाई नॉट नंबर? लेट्स से आपका वेट है 90 kg, है ना, 90 kg आपका वेट है, एंड आपको डाइट प्लान आपने न्यूट्रिशनिस्ट से कनेक्ट किया या फिटनेस कोच से कनेक्ट किया या आपने हैबिट से कनेक्ट किया, आपने उनको बोला मुझे महीने में 4 किलो कम करना है, किसी और ने बोला कि मैं आपको 6 किलो कम करा के देती हूँ। लेट्स से आप 6 किलो कम कर रहे हो, लेट्स से मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको महीने में 6 किलो कम करके दूंगा ना। एक साल के एंड में आप 72 किलो, 12 into 6, 72 kg आउट। नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद 18 kg वेट। आप गायब ही हो जाओगे ना फिर 14 महीने में। तो weight loss, your health doesn't work on number. It doesn't. Your weight loss doesn't work in a linear way. आप हर महीने 3-4 किलो का गोल नहीं कर सकते, because your weight loss doesn't work in a linear way. What you need to do is you need to start doing things which are good for your health, which are good for your body to maintain a right weight. The next question would be, what is the right weight? अभी सब लोग BMI स्केल के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट BMI स्केल? मुझे बताओ BMI स्केल कौन कौन कि सर मेरा वेट है ना BMR से 5 किलो ज्यादा है, या मेरा 7 किलो ज्यादा, या मैं जिम में गई थी उन्होंने मुझे कुछ तो एनालिसिस कराया उसके हिसाब से मेरा इतना या कम है ना। गाइस, BMI स्केल 50s में इन्वेंट हुआ था। एंड क्यों हुआ था पता है? अगर आपका वेट 60-70 होना चाहिए वो स्केल के हिसाब से, और आप 90-100 120-140 एक्सट्रीम ओबेसिटी में नहीं खेल रहे हो, इफ योर वेट इज नॉट दैट, वो मेजर करने के लिए, बिकॉज इफ यू आर एक्सट्रीमली ओबीज, यू आर एक्सट्रीमली अंडरवेट, यू कैन लीड टू कंडीशंस लाइक डायबिटीज, जॉइंट इश्यूज, थायराइड एंड ये सब हार्ट कर। एंड इफ यू आर अंडरवेट, माल न्यूट्रिशन, वो डिटेक्ट करने के लिए वो स्केल को इजाद किया गया था। यू आर, बट दैट इज, we are not living in 50s, we are all educated modern 2024 में रहने वाले developed digital India में रहने वाले इंसान। why are we still focused on the scale in the past? Then you will be like, then how do we go about it? What is the ideal number? I'll tell you, there is no ideal number. If you don't have any major clinical condition, diabetes, cholesterol, PCOS, हार्ट कंडीशन, ये कुछ नहीं है आपको, आप अपनी दिन की सारी एक्टिविटीज अच्छे से कर पा रहे हो, आप खुश हो, यहाँ पे आप अच्छे से सो पा रहे हो, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली इज गुड, आपको कोई इंजरी नहीं हो रखी है, आपके एनर्जी लेवल्स आर गुड, आपकी स्किन एंड हेयर एंड एवरीथिंग इज गुड, दीज ऑल आर साइंस ऑफ हेल्थ। नंबर ऑन द स्केल इज नॉट द साइन ऑफ हेल्थ। अभी इफ यू फील कि ये सारी चीजें हो रखी है मेरी लाइफ में, आई एम एब्सोल्युटली ओके, मेरे को कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली ओके, बट आई स्टिल वांट टू लूज 5-6 kg so that I can look better. It's good too, because it's giving you happiness here. But that shouldn't be the only reason why you are losing weight. आपकी बाकी की सारी चीजें ऊपर नीचे and you are just focused on the number on the scale because you want to look skinny or some certain way, then you are not happy here, you are not healthy, you are just dropping number or increasing number on the scale. You have to understand this, because weight loss कैसे करना है वो हमने already बात कर लिया है। You have to figure out your calories, you have to start eating 300-500 calories less, you have to eat it in carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber का balance, you have to sleep well, you have to work out. These are the steps that you need to do. I'm not going to tell you anything different, but वो चीजें रोज की रोज करना, अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना, so that you don't feel like a diet. That's what the goal should be, because जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे, your weight loss and you getting into the shape will be a byproduct of it. रही बात people saying कि मुझे 15 दिन में weight loss करना है या एक दिन का डाइट दो, you tell me who has become overweight overnight? आप मुझे बताओ 15 दिन में किसका वजन 50 से 70 kg हो गया है? Who has become Adnan Sami from Kareena Kapoor zero size figure overnight? आप रात को मस्त में करीना कपूर के तरह सोए थे और दूसरे दिन अचानक से अदनान समी हो गए। अदनान समी भी बेचारा, अभी उसने बहुत सारा वर्क करके, डाइट करके, जो भी कराया उसने, ही इज इन शेप, बट आई हैव वर्कड विद दिस कोच एज वेल। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Very, very important. You have no idea. You are isolating number on the scale with the whole health. And this is the purpose of today's session. I want you to take away this message from today's session. Your health is not defined by the number of scale. If you want to lose or gain a few kgs upar niche, then you have to do the things that we have already talked about. Balanced diet, clean diet, sleep well, work out regularly. रही बात बाकी की सारी चीजों की, there are so many, because of this mentality of us as a society, there are so many businesses who are trying to capitalize on your insecurity, जो कभी काम करता ही नहीं है. People will try to sell you green teas. Green tea is an excellent source of antioxidant. Weight loss नहीं करवा रही है. They will try to sell you कि आप ये पानी पी लो, वो पानी पी लो, सुबह उठ के गर्म पानी, और it's good for your immunity. It has minerals and vitamins, but weight loss नहीं हो रहा है आपका उससे. People will try to sell you fat burners. There is nothing, not a single pill जो आपकी बॉडी में जाके फैट बर्न करेगी. फैट बर्न होगा तब ही जब आप जरूरत से 300 से 500 कैलोरीज कम खाओगे. यू विल पुट योर बॉडी इन अ सिचुएशन वेयर योर बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग द स्टोर्ड फैट जो आपको लूज करना है एज एन एनर्जी. धीरे धीरे आपका फैट कम होगा, धीरे धीरे आपका वेट कम होगा. सिंगल आइसोलेशन में प्रोडक्ट्स डोंट वर्क. And if you want to lose weight permanently, you have to change your lifestyle. जो हम डाइट कल्चर में जी रहे हैं ना, you have to replace the word diet with lifestyle change. A lot of you might have that concern कि सर मैंने ये डाइट किया था, मुझे बताओ. हाँ, यस करके मुझे बताओ कि if you have gone through this. सर मैंने डाइट किया था, मैंने ये प्रोग्राम फॉलो किया था, मेरा 10-12 किलो कम हो गया, बट जैसे ही मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया मेरा वजन बढ़ गया. प्लीज मुझे बताओ. या आपका वजन वापस से क्यों बढ़ा पता है? नॉट बिकॉज आपने वो डाइट छोड़ दिया, बिकॉज आप वही आदतों पे चले गए जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ा था. ये पोलियो नहीं है. आपका वजन कोई वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से नहीं बढ़ा है. आपका वजन आपकी आदतों से बढ़ा है. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल सिली एनालॉजी. ठीक है, मुझे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर ये डाइट कब तक करना पड़ेगा. तो जो लोग भी ये टेम्पररी डाइट ढूंढ रहे हैं ना कि कब तक 3 महीने का प्रोग्राम, 6 महीने का प्रोग्राम, डाइट प्लान, ये वो, इतना किलो कम हो जाएगा. इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, इट्स अ सिंपल एनालॉजी फॉर यू. लेट्स से आपके घर से ऑफिस जाने का एक 15-20 मिनट का रास्ता है. ठीक है, वो रास्ते से आप जाते हो स्कूटर लेके रोज. अभी बारिश का सीजन था, बीच में खड्डा पड़ गया, पानी भरा हुआ था, तो आपको ध्यान नहीं रहा. अभी आप चलाते चलाते गए एंड देन यू डिडंट नो कि देयर इज अ खड्डा, पानी था ऊपर. यू थॉट कि ये तो निकल लूंगी मैं, बट बाय मिस्टेक यू खड्डे में गिर गए. नाउ यू आर इन द खड्डा. आपको कुछ इंजरीज आए, आपने गाड़ी वाड़ी निकाली, आप हॉस्पिटल गए, पाटा पिंडी सब करवा दिया अच्छे से. अब आप डॉक्टर से पूछ रहे हो कि सर मैं वो वापस से खड्डे में गिरूंगी तो मुझे लगेगा क्या? लॉजिकल चीज क्या होती है? आप वो रास्ते से जाओ, देखो वहां पे खड्डा है तो इसे साइड से ड्राइव करके निकलो. या तो कंप्लेन करो सोसाइटी वालों को कि खड्डा रिपेयर करा है. यू कांट बी लाइक मैं वापस से खड्डे में गिरूं और मुझे इंजरी ना लगे. योर वेट लॉस जर्नी इज अ जर्नी. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. You have to be traveling on that, doing the things which are needed. Destination is a better health. There is no shortcut. There will be people who will try to tell you कि ये खरीद लो, ये हो जाएगा. But it's like आपकी जर्नी, आपका डेस्टिनेशन है, आपको जाना है कैलिफोर्निया, यूएसए घूमने जाना है, आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमना है ना. एक होता है ऑफिशियल वे में आप अच्छे एजेंट के साथ या खुद से अच्छा सा रिसर्च करके वीजा अप्लाई करके सब वहां पे पहुंचे, आप देख रहे हो. और दूसरा होता है स्कैमिंग वीजा वाला, जो आपको बोल रहा है मैं गाड़ी में आपको लेके जाता हूं. अरे क्या बात कर रहे हो, 14 घंटे थोड़ी लगते हैं यूएसए पहुंचते हैं, मैं 3 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा. हमने स्पेशल शॉर्टकट ढूंढा हुआ है 3 घंटे में. फिर वो 1.5 घंटे में रुका के आपको बोल रहा है हम आ गए यूएसए. उन्होंने एक स्टूडियो बनाया हुआ है जहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बड़ा सा ऐसे मॉडल बना हुआ है, एंड आप वो देख के खुश हो रहे हो.
There is no shortcut. It's a journey. You have to start fixing your journey. You have to find the challenges which are needed for your weight loss. And challenges, third time I'm repeating, challenges is not you not being able to drink green tea or stuff. आपके घर के खाने से सेव हो सकता है. We have to fix it by figuring out how much we need, what all we need, and do it in a way that it fits in your culture. If you are a South Indian, I can't ask you to leave dosa, idli, upma, or uttapam and ask you to eat oats and broccoli. फिर oats and broccoli magic pill क्यों नहीं होते? आप नहीं खा पाओगे because it's not your daily routine. So you have to find out whether you are Sindhi, Gujarati, Marathi, Rajasthani, South Indian, who you are, what is your cultural food. You have to fix in nutrition fundamentals there. You have to do it in a way that it doesn't feel like diet, and that's where you will start changing your lifestyle. That's where your journey will become beautiful. Your destination of better health is a byproduct of this. So this is what I wanted to talk to you about weight management today, because there is a lot of misinformation. I have made a lot other pointers as well, but nothing else is going to work. You realize it today on what March 17 March 8:15 p.m. Indian Standard Time or 8:51 p.m. आज आप ये realize कर लो, या तो 5 साल के बाद आपको यही realize करना पड़ेगा, because unfortunately there is no shortcut to weight management. बाकी की सारी चीजें तुम कर सकते हो टू बेटर योर हेल्थ, वेट लॉस नहीं हो रहा. ठीक है. माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी. लेट्स गो थ्रू सम Q&A. Yes, it was such an amazing one. Thank you More so much. than more than that, I think like I got a life lesson, and I feel like that was so true. Like if you want a sustainable lifestyle, you have to talk about, or you have to work towards changing something which you can like sustain forever, not just like Yep. some time. So Yep. true, amazing. Thank you so much. Going through some of the questions, Hmm. people have been asking about their regular routine. Like some people work in night shift, some people have absorption, some few other things. So like, is there something that these people can also do that would help out? Like because like some things they can't change in the lifestyle, but that is causing weight gain. That's absolutely, yeah, I understand. So let's, because night shift and mile absorption, different topics. So let's first take night shift. Okay. So I think we spoke in one of the sessions saying that we all are trying to do whatever is best possible in our hands. अगर आपके पास चॉइस होता डे शिफ्ट करने का तो यू वुड हैव, राइट? बट Yes. because of whatever reason you are doing the night shift, so that is non-negotiable. But there are so many other things which are negotiable in your environment. So for the night shift, I always say that कि just switch your day. So जैसे you are in a normal routine, you are working 9 to 5, let's say. So you wake up at a certain time, let's say 6 o'clock, then you do your movement, and then you have your breakfast, and then you leave for work around 8ish. You reach to work at 9, finish your work at 5, come home 6 o'clock, wait for a couple of hours and have your dinner, and then a couple of hours you sleep. Change the timings for your night shift. Like you have to just replicate the same model. आपने नाइट शिफ्ट खत्म किया, लेट्स से सुबह को 5 बजे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, है ना? तो 5 बजे खत्म किया, यू कम होम, you spend some time with your family, have your last meal, wait for a couple of hours and then sleep. Then you wake up, you do your movement, wait for a couple of hours, do your first meal, है ना? And then you go to your office. And ऑफिस पे जैसे डे में ऑफिस पे लंच लेके जाते हो, वैसे नाइट में ऑफिस के लिए एक मील आप फिक्स करोगे. या घर से काम कर रहे हो तो नाइट में जब आपको भूख लगती है उसके लिए it's not important when you are eating, it's more important what you are eating. As long as you are eating a balanced diet within your calorie budget containing all the various sources that your body requires, it's okay. It would be ideal if you're doing the day shift, but trust me, our bodies are so amazing at adaptation. If you're doing night shift for over a 6 month, your circadian rhythm will set according to your night shift, so you don't have to worry about it. Night shift is not a challenge. हमें बस replicate करना है डे को नाइट शिफ्ट. ठीक है. Second, about the malabsorption side of it, the fundamentals of nutrition are not going to change. Malabsorption is what your body is finding it difficult to absorb or soak in whatever you're trying to eat. But a lot of us use this term very loosely. हमें पता नहीं है exactly कि malabsorption हो रहा है कि नहीं. How do you find that out?
what is your criteria of telling that कि आप malabsorption में हो? First and foremost is you get your blood reports done. अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रोज विटामिन डी B12 में सनलाइट में टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी सही से खा रहा हूँ, बट मेरी ब्लड रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि उमेश तुम्हारा प्रोटीन या डी कम है, तो देर इज अ गैप इन बिटवीन कि मैं खा रहा हूँ बट मुझे ब्लड में वो दिख नहीं रहा है. हैव यू डन दैट? Because if it is the case, then you have to find out why the malabsorption is happening. It could be happening because of your digestive tract issue, celiac disease हो गया, IBS हो गया, gut health issue हो गया. You have to find that out. So there is no generic advice for that. You have to find out what is the reason why you are going through malabsorption. और first उससे पहले पहले find out करो whether you are going through malabsorption. Because if you are not eating right, तो आपको उसका असर दिखेगा ही नहीं, है ना? So first fix the basics. True, true, true. I mean, like a lot of people were asking about that also. Like you mentioned protein. Yeah. A lot of people have been asking, like, I've been having protein, I have been doing workout, but still, some people have said they've not been able to put on weight. They've been trying to put on weight, and some people said that like our balanced diet seems to be balanced, but they're still not able to lose weight. So So these दोनों अलग अलग क्वेश्चन, वेट गेन वेट लॉस, राइट? तो फर्स्ट आई एड्रेस द वेट गेन वाला पार्ट. तो I know a lot of people अभी like 2 हफ्ते हुए हैं, since 1 week it has happened since we have talked about the weight gain side, right? तो weight gain हमने वो pillow वाला example लिया था कि if you want to make a smaller pillow or larger pillow, you have to open the stitches, add the cotton and then stitch it back, and then the pillow will get bigger, right? So there are 3-4 steps for you to follow before you start seeing changes weight gain में. तो overnight nahi hoga. You have to get into that system first. So if you have started it a couple of weeks back, you have to give yourself some time. But अगर आपने बहुत टाइम से कर लिया और आपको प्लेटो हिट हुआ है, that means you are, let's say मैं 50 का था, अब मैं 62 पे पहुंच चुका हूँ, but अभी भी मैं खाना 50 किलो वाला खा रहा हूँ, तो my body is not going to make change. You have to make progress as well वहाँ साथ साथ. Let's say आप पहले दिन जिम जब ज्वाइन किया था, you were lifting 5 किलो का डंबल, और 4 महीने के बाद भी आप 5 किलो का लिफ्ट कर रहे हो, तो योर बॉडी हैज गॉटन यूज्ड टू 5 किलो. So there is this concept called progressive overload, which can happen. You have to apply in nutrition as well as in diet. If you have seen result, you have to start increasing as per your new weight. हाँ? And रही बात, what was the other side of it? Balanced diet खा रहे हैं, but हाँ, weight loss नहीं हो रहा है. आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, बट आप अभी भी कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे हो. हमारे दिमाग में पोर्शन कंट्रोल का आइडिया इज नॉट राइट. हम लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ टाइनी एग्जांपल. हाफ अ पीस ऑफ ब्राउनी हमें ऐसा लगता है तो आधा पीस है ना. इट कुड हैव अराउंड 300 कैलोरीज, जिसमें से बहुत सारे लोगों का एक पूरा मील आ सकता है. ठीक है, तो एक रोटी में आपको 25 कैलोरीज मिलती है. ठीक है, आधी ब्राउनी में से आपको 200 से 300 कैलोरीज मिलती है. आप सोचो एक ब्राउनी की जगह पे आप कितनी रोटी खा सकते हो. Are you with me? Yes. So Yes. हमारा पोर्शन कंट्रोल का थोड़ा सा is messed up, and that's where nutritionist का consultation and coaching becomes थोड़ा सा important, because we all eat different things and we eat different variety of things. तो उसका पोर्शन कंट्रोल identify करना is a challenge. Yeah. So you have to start tracking your macros basically. So can you also talk about a little bit about making your own breakfast? Um, हाँ. a lot of people have been asking about like different Yeah. breakfasts. So I have already मैंने उनको वो एक शीट भेजा है. So in that make your breakfast sheet में you have seen you'll see different shelves, carbs, proteins, fats का shelf है, and then fiber के 2 baskets हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका मील बैलेंस होना चाहिए. देयर शुड बी 1 आइटम. तो मैंने आपको जो पहले मील्स भेजे थे उसमें मैंने वही शेल्फ का इस्तेमाल किया. आई हैव टेकन 1 आइटम ईच फ्रॉम दैट शेल्फ and took one of the fibers, either fruit or a veggie. Ab you have to do the same. You pick one carb. It could be bread, it could be poha, upma, idli, vada, जो भी, and then that is cooked in fats. तो आपको अलग से कटोरी ऑयल लेके बैठने की जरूरत नहीं है, but you can add a few almonds if you want. And then protein में I have given you different options. Sprouts हो गया, बेसन चीला हो गया, पनीर हो गया. I have given you take that one item, and then take one fiber, either fruit or some stir-fried vegetable or sauteed vegetables. And that's it. That's how you are going to make your own breakfast. That's it. It's as simple as that.
Amazing, amazing. So that like the document that you have shared, we'll share with everyone today, like after this, and along with the recording of the session as well. So anybody who wants to get this document, please see it in the group. Hmm. And before we go, can we take like one or two questions, or Sure, we there is so one question बहुत repeatedly हो रहा है. It's the Herbalife supplements के बारे में. So मेरा personally कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है वो brand के साथ. I sometimes feel sorry for Virat Kohli because a lot of youngsters admire him, and he's promoting that brand. He's a brand ambassador, but I'm sure he has reasons. But there are a lot of recent studies saying that Herbalife products have caused a lot of liver damage in a lot of cases because they have certain nutrients which are not safe for our body. But whenever a nutritionist or a coach like me raises voice, they throw a legal notice. तो मेरे जैसे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी वो लीगल नोटिस भेज देते हैं वो लोग. तो आई डोंट टॉक मच अबाउट इट ऑन इंटरनेट, बट इन general, any meal replacement supplement. So Herbalife is nothing but a meal replacement supplement majorly. And उनका एक drink आता है Afresh, that a lot of people drink at the first thing in the morning. उनको ऐसा लगता है कि हम चाय कॉफी नहीं पियेंगे, it's a better alternative. तो मैं इन दोनों के बारे में ब्रीफली बात कर देता हूँ. मील रिप्लेसमेंट्स आर नॉट सस्टेनेबल. यू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं हर्बलाइफ पे पूरी जिंदगी रह सकती हूँ क्या? इफ द आंसर इज नो, हर्बलाइफ इज नॉट फॉर यू. टू, रही बात अफ्रेश की, अफ्रेश हैज अ लॉट ऑफ कैफीन. दैट्स द रीजन व्हाई आपको वो एनर्जी फील करवा रहा है. तो अगर आपको चाय और कॉफी के कंपैरिजन में ये अच्छा लग रहा है, तो 3-4 कप ऑफ चाय और कॉफी जितना कैफीन उसके एक चम्मच में होता है. तो यू आर जस्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन कैफीन. सो ट्राई करो, अगर आप अफ्रेश ले रहे हो तो एक हफ्ते के लिए अफ्रेश लेना बंद करो. दैट वीक विल बी मिजरेबल फॉर यू बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स विल बी ड्रॉप. यू आर ऑन अ impression of you being high energy because of the higher caffeine dosage. It's like a lot of gym goer, they take pre-workout supplement. Pre-workout supplement के एक चम्मच में 9 cups of coffee के equivalent of caffeine होता है. So of course सोचो आप 9 कप कॉफी पी के गए हो तो you are going to feel buzzing, right? So same is happening with that. So my suggestion would be घर का खाना. And if you want to go for any supplementation, it should be either clean whey protein supplement, brand you choose, not a meal replacement, just to meet your daily protein requirements, or supplements of the nutrients that you are deficient in. तो विटामिन डी की कमी है, जब तक आप धूप में बैठ के विटामिन डी अच्छे से प्रोड्यूस करो, तब तक आप 4 हफ्ते के लिए विटामिन डी ले सकते हो. बट डोंट रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स थ्रू आउट. घर का खाना इज इनफ. Perfect. I mean, we answered the next question also. A lot of Yeah. people are asking any suggestions on multivitamins. What do you recommend for other supplements and stuff? I So can't, you na answered. Baba. You have to. And my details are already there. So once you get your blood reports done, we can do a consultation and I can recommend you कि आगे क्या करना है. Because हमने विटामिन वाले सेशन में भी बात किया था इसके बारे में कि please do not buy multivitamin over the counter because there are certain vitamins जो आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं. अगर आपको पता नहीं है तो वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं. राधिका जी का सवाल विल टेक एंड देन विल एंड द सेशन. राधिका जी, इफ द इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में टूट जाता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही मैजिक पिल नहीं है, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल है. तो ट्राई करो, यू स्टिक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग. बट अगर बीच में टूट भी जाता है तो इट्स नॉट गोइंग टू रिवर्स इफेक्ट. रिवर्स इफेक्ट्स कब होंगे? जब आप अपने पुरानी आदतों पे, आप इसे खड्डे वाला एनालॉजी याद कर लो होगा. ठीक है. But awesome. I think I hope we have covered everything. मैं finally एक चीज reiterate कर दूं then before I go. Sure. Yeah. Yeah. Reiteration is एक थ्री इडियट्स में है ना, थ्री इडियट्स में एक लाइन है शुरुआत में थ्री इडियट्स मूवी में कि आउट ऑफ 3 मिलियन और 330 मिलियन स्पर्म्स हम सबको ये जिंदगी मिली है ना. आपने इतने लाख स्पर्म्स के साथ कंपीट करके आप ये दुनिया में आए हो, तो आपकी जिंदगी एक स्केल पे या मेजरमेंट टेप पे डिपेंड नहीं कर सकती. वी ऑल आर मेड और हियर ऑन दिस प्लैनेट टू डू बिगर थिंग्स. तो हमें बिगर चीजें देखनी पड़ेंगी. टू स्टार्ट अप्लाइंग लॉजिक, वेट लॉस इज नॉट एज चैलेंजिंग एज यू ऑल आर थिंकिंग. बट वेट लॉस को तुम जर्नी समझो, डेस्टिनेशन मत समझो. डेस्टिनेशन इज
you being in the full potential of your health and maximizing it. ठीक है, सोचो इसके बारे में, हम कल वापस से मिलेंगे तो विल टॉक मोर अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। बट आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ रियली गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, जय जिनेंद्र, शब्बा खैर, स्लीप वेल, मजे से, ठीक है। आई एम ऑफ, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Umesh. It was amazing and we learned a lot today. So thank you for today माय प्लेजर, and थैंक यू, बाय बाय। amazing. Bye. Everyone, before we go, we are going to send you the recording for today's session, which will be available for next 24 hours, and also the formula for breakfast. So please check it out in the message. It will come in the habit groups. So if you do not get it, you can just ask our support team as well, where you get your regular messages from, and that should help. So I hope you learned something today. And again, reiterating as Dr. Umesh said, let's not do weight loss for any other thing but health. So let's just focus on being healthy and adopt any habit which is sustainable for long term. All right. So thank you so much, and we'll see you tomorrow. Bye.